महाराज अजय सिंह जी जितने भी भजन अपने गुरु की याद में प्रेम में लिखा है सब विरह भरी हुई। Sant Ajay Singh Ji, whatever bhajans he has written, the bhajans are full of love and affection, and they have very strong pangs of separation from the master. तो कहते वो विरह उनकी हर जो भजन और वाणियों में झलकता है कि उनका गुरु से कितना प्रेम, कितना लगाव था, जो एक सेकंड भी दूर नहीं होता था। Each and every bani of his,
it flows or oozes with the love and affection towards his master, and has very strong pangs of separation, and that is reflected in all the sentences, and it is reflected in the Bani. कहते वो विरह गुरुमुखों के गले का हार हो जाता है। वो रात दिन गुरु के विरह में, हाँ, और उसी के रंग में रंगे होते हैं। The pangs of separation for Gurumukhs is like a necklace. They are adorned with that as a ornament. The pangs of separation that they have from the masters. और वो विरह उनकी आंखों से छलकता है, जैसे विरही रात दिन अपने प्रीतम की याद में आंसू बहाते हैं, वैसे एक गुरुमुख अपने प्रीतम की याद में, गुरु की याद में रात दिन तड़पते हैं, रोते हैं, जब तक कि उनका दर्शन नहीं हो जाता है वो विरह शांत नहीं होती। That those pangs of separation are reflected in the eyes of the Gurumukhs. We can see those in their eyes. Uh, the the tears keep flowing down till they get the darshan of their Sadguru. So that those pangs of reflection, pangs of separation are reflected in the eyes. कहते मीरा को जब विरह प्रकट हुआ, मीरा राजवाड़े में पली थी। जो उनके पति गुजर गए तो उनके छोटे भाई राजा बने। मीरा इधर उधर साधु संतों के समागम में जब जाती थी तो राणा को अच्छा नहीं लगता था। When Mirabai got those pangs of separation, her husband had expired, and her younger brother-in-law became the king. And when she got these pangs of separation, she would go outside and meet all the saints and Mahatmas, which was not liked or frowned upon by her brother-in-law. कहते हैं मीरा को बहुत प्रयत्न किया कि तुम ऐसा मत करो, हमारे राजवाड़े की इज्जत जाती है, तुम छत्राणी हो, राजमहलों में रहने वाली हो, तुम बाहर जाके लोगों के बीच में नाचती हो, तो ये अच्छा नहीं लगता है। So he would feel that it's a blemish on the reflection of the Rajputs, because as a queen, you should not go out and dance with the Mahatmas or with others, and that reflects very poorly on the palace. तो मीरा बहुत समझाते, लेकिन मीरा करे क्या, वो अपने बस में नहीं थी। उसे तो, हाँ, लगन लगी थी, विरह पैदा हुई थी। जब तक कि साधु संतों के समागम में जाती नहीं तो उसको चैन नहीं होता। But her love for the master, the pangs of separation were beyond her control. And whenever she would see the Mahatmas or saints, she would uh, go out and seek their company and dance in their company. क्योंकि वहां पे उनके गुरु का प्रेम और प्यार जागृत होता था, और उसको अपने गुरु की याद में वहां पे जो फायदा मिलता था वो घर में नहीं मिलता था। Whenever she would see the Mahatmas or saints, it would automatically bring about her love and affection and remembrance of her master. And she would dance out in having those pangs of separation from her master, which she could not get in the palace. She would always, therefore, go out and be amidst the company of the saints and other Mahatmas. तो मीरा जब नहीं मानती तो गुस्से में आके राणा ने दासी के हाथ में जहर का प्याला देके भेजा। कहता था कि मीरा को गुरु से प्रेम है, ऐसे ही दोगे तो नहीं पिएगी, गुरु चरणामृत कह के देना। So the king, her brother-in-law, could not stand this, and he uh, therefore decided that he will give a glass of poison to her,
and he will poison her. So he gave that glass to her maid, and he said that if you just hand it over, she won't drink it. So you tell her that this is the water from the feet washed of your master, and she will happily then consume that. तो दासी जहर का प्याला लेके मीरा के कमरे में गई और जाकर के दरवाजा खोल के अंदर गई तो मीरा भजन में बैठी थी। कहते कि ये गुरु चरणामृत है, राणा ने भेजा है। So the Dasi took that glass of poison, and she knocked at the door of Meera, who was sitting in meditation in the contemplation of her master. And she went inside and offered that glass and told her that this is the water from the feet of your master. तो मीरा गुरु चरणामृत कहते ही घटाघट पी गई। आओ देखा न ताओ, लेकिन वो जो जहर था मीरा के अंदर विरह होने से वो अमृत हो गया। So, listening to her maid, Meera was overjoyed and she immediately swallowed that glass. And because she had such strong pangs of separation, that poison did not act as poison, it became nectar inside. तो मीरा ऐसे भी ना मरी तो राणा को और चिंता हुआ। तो उसने एक सपेरे को पैसा देके एकदम विषैला सांप जो जंगली हो, जिसने इंसान को नहीं देखा हो, ऐसा सांप पकड़ के लेके आओ कि वो पिटारा खोलते ही डस ले और मीरा मर जाए। So, since this did not, the plan of that king did not succeed, he tried another way of paying off a snake charmer and asked him to bring the most venomous snake, which, as soon as the basket is opened, will strike out and bite. So he got that snake charmer to bring that such a snake. Uh, तो कहते हैं कि ऐसे हुआ। करीब 15 दिन 20 दिन के बाद एक सांप मिला, सपेरा लाके पिंजरे में बंद करके राणा के पास लाया। तो राणा ने उसे सोने के पिटारे में बंद करके और ताला मार के चाबी दासी के हाथ में दिया कि ले जा मीरा को देना कि राणा ने तुम्हें सोने का हार भेजा है और तुम एकांत में दरवाजा बंद करके पहनना। so after about 15-20 days, that snake charmer could get such a snake, and he brought him in a basket. When he got him to Rana, the king, he transferred that snake into a gold basket and locked it, and in a casket, in the gold casket, and locked it. And he told the maid and gave her the key and told her that you go and tell Meera that I have given her a gold necklace, that she should lock the door and then try this out. कहते हैं जब मीरा को दासी दिया, दासी चले गई, मीरा ने घड़ी लगाया और वो चाबी से खोल करके पिटारा जैसे खुला किया तो सांप बाहर आया। तो मीरा ने बड़े प्रेम से उसको पकड़ के अपने गले में डाल लिया और वो सांप हार बन गया। So when the maid gave that casket to Meera, Meera locked the door and opened that casket. Then she found that there was a snake inside, but she happily took that snake. She caught the snake and she garlanded herself with that snake, and the snake got converted into a garland. तो कहते हैं कि इस तरह से तब मीरा को अच्छा नहीं लगा कि मैं इनका कुछ बिगाड़ भी नहीं रहा हूँ और ये मेरे पीछे हाथ धो के पड़े हैं, तो मैं यहाँ रहने से फायदा ही क्या। और मीरा ने फिर चित्तौड़ छोड़ दिया और द्वारका को चली गई, जो गुजरात में है। असली द्वारका तो समुद्र में चला गया। फिर उस समय के राजा ने फिर द्वारका बसाया, ये डुप्लीकेट है। तो कहते हैं द्वारका में चली गई और फिर लौट के नहीं आई। So after this episode, Meera was disappointed and she felt that I'm not
causing any harm to these people, but they are trying all these things. So they seem to be very unhappy. So she left that place. She left the palace in Chittor and she went to Dwarka in Gujarat. The original Dwarka has submerged, which was constructed by Lord Vishnu Krishna. So this was created by a subsequent king. So she went and settled in that Dwarka and never returned back to Chittor. तो कहते इस तरह से जब एक विरह की आग अंदर जलते रहती है, उसके सामने सिख के अंदर कोई भी ऐसी वैसी चीजें नहीं, सब जल के भस्म हो जाती हैं और खाली गुरु का प्रेम और प्यार रह जाता है. So when that pang of separation is there from the Sadguru, it is very strong inside, then nothing can stand that, the strength or the intensity of that, of those pangs of separation, and everything is reduced to ashes. So it is only that pangs of separation which then uh, take that devotion forward for the devotee. ये गुरु का बन जाता है और गुरु इसका बन जाता है, तो वो सिख को फिर आगे और कोई कमी गुरु नहीं होने देता. Then the devotee becomes uh, he he gets identified with the master, and the master gets identified with the devotee, and such that the master thereafter takes all care of that devotee, and he doesn't allow any shortcomings to disturb that devotee. तो इसीलिए कहते हैं हमें भरोसा पक्का होना चाहिए. विश्वास पक्का होगा तो हमारी भक्ति आगे बढ़ेगी. बिल्डिंग का फाउंडेशन अच्छा होगा तो बिल्डिंग टिकेगी. अगर विश्वास कच्चा होगा तो हमारी भक्ति आगे नहीं, डावाडोल रहेगी, आगे नहीं बढ़ सकती. We should have strong faith in the master. Just like a strong foundation is necessary for a building, if there is a strong foundation, the building will last long. Like that, if you have strong faith in the master, then your devotion will keep progressing. But if you are in two minds in about the faith in your master, then the devotion will also not progress. तो समय बहुत अच्छा है, वातावरण शांत है, हमें इससे फायदा उठाना चाहिए. हम आंख बंद करके भजन सुमरन से जुड़े. The time is good and the atmosphere is quiet, so let us close our eyes and get connected to Simran and Dhyan.